Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of Basic Electronics. Myself, Professor Gaurang Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today we are going to discuss about the chapter 1, that is diode theory and application. So in previous lecture we were study through the animation video, as well as we were study the theory of that diode and forward bias and reverse bias of the PN junction diode. Now in this lecture we are cover this topic, that is VI characteristic of diode in depth. So the VI characteristic of diode that we will see in the depth in this video lecture. Okay student, so we will begin it. So students, now we will start, that is the what is VI characteristic of diode. Up till that we have seen how the PN junction will work created and how that forward bias and reverse bias condition is affected that PN junction diode, and how the current or electron is flow through this PN junction diode. Okay, so for the VI characteristic of diode, what is the VI characteristic? First of all, that is the voltage and करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड. तो हम जब डायोड यूज करेंगे प्रैक्टिकली, तब वोल्टेज और करंट की पोजीशन उसमें किस तरह से रहेगी, कि भाई हम कितने वोल्टेज अप्लाई करें तो हमें करंट उसमें से कितना फ्लो हो रहा है और कौन सी पोजीशन पे फ्लो हो रहा है. ओके, सो what happened for the VI characteristic of diode in ordinary resistor? First of all, first statement that is given, an ordinary resistor is a linear device because the graph of its current versus voltage is a straight line. अगर हम ordinary resistor की बात करते हैं तो वो क्या है? That is a linear device because the graph of its current and versus voltage वो straight line में आएगा. That means जितना आप voltage बढ़ाएंगे उतना ही उसमें उसका drop current का होगा, और that is give you in a straight line. But इन केस ऑफ डायोड में ऐसा नहीं है. डायोड इज अ डिफरेंट डिवाइस. ओके, इट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस. दैट मीन्स जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है. इट विल नॉट लाइक दैट. सो दैट वी विल सी through the characteristic of the diode. Now here that is given, it is a non-linear device because the graph of its current versus voltage is not a straight line. Okay, as we discussed. Now the reason is the barrier potential. उसका reason क्या है कि भाई straight line में हमें क्यों नहीं मिल रहा है उसका ग्राफ? So the reason is the barrier potential. So हमने जब वहाँ पे देखा कि भाई barrier potential जो create होता है तो P और N जो material है उसके junction पे, okay, वो this is the reason for the this non-linearity of the diode. Okay, now when the diode voltage is less than the barrier potential, the diode current is small. हमने देखा कि भाई अगर हमको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है पी जंक्शन, पी रीजन से एन रीजन तक, तो हमें बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करना पड़ेगा. और हमने देखा कि जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का जो है वो है 0.7 वोल्ट. तो जब तक हम उस उतना और उससे ज़्यादा वोल्टेज उस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड और उस जंक्शंस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा. ओके, दैट्स वाई
when the diode voltage is less than the barrier potential, the diode current is small. क्योंकि अगर barrier potential से कम voltage है तो वो जो बीच का जो junction है उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और करंट विल नॉट गोइंग टू बी फ्लो और देयर इज अ वेरी स्मॉल करंट इन डायोड. ओके, नाउ when the diode voltage exceeds the barrier potential, the diode current increases rapidly. That we had seen in forward bias के भाई उससे ज़्यादा हमने potential उसको दिया तो फिर वो barrier potential को क्रॉस करके करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ we will see the schematic symbol and case style. So over here there is a schematic symbols is given in this figure. You can see this is a PN junction diode, this is a P type material and this is an N type material. Just a moment students. Thorough lectures. Just a moment. Okay students, so this is the figure that is given over here. That is the P type material and this is the N type material. You can see in this figure this is a P type material and this is the N type material, and when we combine or when we join these two materials it forms a one device that is known as a diode. Okay, so these two terminals are taken out from over here. This terminal is known as anode, okay, which is connected with the P junction. This is the anode and this is the cathode which is connected to the N terminal. okay, और ये है हमारे डायोड का सिंबल. ओके, और ये जो लाइन है उस पे ये क्यों दी गई हुई है, क्योंकि जब जो भी ये जो लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है, दिस इज द साइड ऑफ कैथोड, और ये एरिया जो है जिस पे लाइन नहीं दी गई है वो है एनोड. ओके, so in practically when figure is given there is also on diode you can see there is one line is draw over there with silver color, so that is no that part is known as cathode. और वो क्यों देते हैं कि जब सर्किट में आप कनेक्ट करते हैं डायोड को तो आपको इजीली पता चले कि भाई एनोड की साइड कौन सी है और कैथोड की साइड कौन सी है. सो बाय मिस्टेक आप उसको गलत तरीके से कनेक्ट ना करें प्रैक्टिकल करते वक्त. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड. okay, so please remember that, and it is formed with the formation of that PN junction material. Okay, now the P side is called the anode as we discussed and the N side is the cathode, and the diode symbol looks like an arrow that points from the P side to the N side, from the anode to cathode. Okay, now here one more figure, that is figure number 12, shows some of the many typical diode crystals and many but not all. उसमें कुछ डायोड्स है वो हमें दिए गए हैं कि भाई वो किस तरह से देखते हैं. नॉट एट ऑल बट सम ऑफ द डायोड्स आर गिवन हियर. देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं डायोड्स के. दिस ऑल आर द सैंपल्स ऑफ डायोड्स. तो इस तरह से कुछ डायोड दिखेंगे, और मैं जो लाइन की बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि भाई कैथोड जो है वहाँ पे देयर इज अ लाइन इज गिवन ओवर हियर to recognize which is the side of cathode. Over here you can see this is the line given for the cathode. okay, ये anode और cathode है. okay, this is also you can see this is the anode and this is the cathode. okay, so such kind of diodes practical, this is the symbol, this is the practical diodes. इस तरह से रियल में ये जो डायोड है वो इस तरह के दिखते हैं. okay, now we will see what is the basic diode circuit. okay, basic diode circuit क्या होती है, तो कि भाई जिसमें एक बैटरी लगी हो और वो जो बैटरी जो सप्लाई है थ्रू द रेजिस्टेंस हम डायोड को दे रहे हो. ओके, दिस इज द बेसिक डायोड सर्किट, एंड व्हाट इट इज shows that figure shows a diode circuit. in this circuit the diode is forward bias, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है थ्रू द रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम एनोड साइड पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और कैथोड साइड नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस सर्किट. ओके, नाउ हाउ डू वी नो, बिकॉज द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल ड्राइव्स द पी साइड थ्रू अ रेजिस्टर and the negative battery terminal is connected to the N side. So this is the N side, that is nothing but the cathode, and this is the P side, that is nothing but the anode. So with this connection the circuit is trying to push holes and free electrons towards the junction. जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि भाई अगर इस तरह के अरेंजमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल को जंक्शन की
तरफ पुश करेंगे, इट विल फोर्स टू मेक अ cross that barrier of that depletion layer. Okay, now we will see what is the forward region. और यहाँ पे ये characteristic दी हुई है students. So this is the characteristic of diode. So exam में भी काफ़ी बार ये characteristic पूछी जाती है, तो please try to understand and please try to remember. Okay students, so यहाँ पे हम देख सकते हैं that is the diode voltage and this is the diode current. So on x-axis there is a diode voltage is given over here, okay, and on y-axis there is a diode current is given over here. So student, there are some of the things is written down. First of all we will see it is when it is start from the zero, जब ये हम potential देना start करते हैं तो यह अप टिल दैट इज फॉर एग्जांपल यहाँ तक जो है वो है 0.7 वोल्ट तक हमने अप्लाई किया हुआ है. यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दैट इज अ 0.7 वोल्ट इज गिवन. एट दैट टाइम इट विल क्रॉस द बैरियर पोटेंशियल. तो हमने जो उसका बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज है और उसे कहते हैं नी वोल्टेज, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं दिया है था, तब तक ये जो है ये जीरो तक रहेगा उसका करंट का फ्लो. नाउ when you increase this barrier potential you can see the value of current over here. करंट की वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी. ओके, सो दैट इज द फ्लो ऑफ करंट इज गिवन ओवर हियर आफ्टर यू ब्रेकिंग दैट बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7 वोल्टेज. सो दिस इज नॉन एज अ फॉरवर्ड रीजन ऑफ द डायोड. ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ड्रॉ द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज द फॉरवर्ड रीजन. Now over here that is the reverse region. When you applied the current over here up till that, then after it will break down the reverse region and the current will flow in reverse direction. So it is also known as a reverse breakdown current as well, or this up till that it is known as a reverse current. So how it works you can easily understood with knowing this figure. Now we will see what are the theoretical statement is given regarding this characteristic. Okay, now we will first discuss the forward region. As in see in figure, there is a circuit that you can set up in the laboratory. After you connect this circuit you can measure the diode current and voltage. जो circuit हमें यहाँ पे दी हुई है वो अगर हम हमारे लेबोरेटरी में सेटअप करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, सो you can also reverse the polarity of the DC source and measure diode current and voltage for reverse bias. अगर आपका जो DC source है ये उससे हम रिवर्स करेंगे तो हम ये रिवर्स करंट भी इसमें रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज भी मेजर कर सकेंगे. Okay, now if you plot the diode current versus the diode voltage you will get the graph that looks like in figure 14. This is the figure 14 students that I had shown to you how that is going to be work. Now for instance when the diode is forward biased there is no significant current until the diode voltage is greater than the barrier potential. तो जब forward bias हम करेंगे तो कोई significant current इसमें flow नहीं होगा. That is no significant current is flow up till it will cross the barrier potential. Okay, now on the other hand when the diode is reverse biased there is almost no reverse current until the diode voltage reaches the breakdown voltage. breakdown voltage तक वो कुछ भी करंट रिवर्स में फ्लो नहीं करेगा. देन एवलेंस प्रोड्यूसेस अ लार्ज रिवर्स करंट डिस्ट्रॉइंग द डायोड. अगर इससे ज़्यादा हमें रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करेंगे देन एवलेंस ब्रेकडाउन विल बी अकर एंड इट कैन बी डैमेज द डायोड एज वेल. ओके, एंड इट विल डिस्ट्रॉइंग द डायोड. सो दिस इज द एवलेंस प्रोड्यूसेस अ लार्ज रिवर्स करंट एंड डिस्ट्रॉइंग द डायोड. ओके, नाउ what is the knee voltage? Okay, what is the knee voltage? This is the knee voltage. You can see basically knee voltage ये क्या है कि जो वोल्टेज हमें वो पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए उसको ओवरकम करने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है उसे हमें नी वोल्टेज की तरह जानेंगे. So this is the knee voltage that is 0.7 volt. So what are the statements regarding that? That is knee voltage. In forward region the voltage at which the current starts to increase rapidly is called the knee voltage of the diode, or the knee voltage equals the barrier potential. So what is it is given in forward region. यहाँ पे ये जो है that is the forward region. You can see it is the forward
region. Okay, so in forward region the voltage at which the current starts to increase rapidly, जिस वोल्टेज पे करंट स्टार्ट करता है इंक्रीज होने का रैपिडली। सो यहाँ से स्टूडेंट देखिए आप, यहाँ तक तो नॉर्मली ये जीरो पे अलाइन कर रहा है, लेकिन आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू इट विल इंक्रीज रैपिडली ओवर हियर। ओके, सो दैट इज the voltage at where this current is going to be increased rapidly, this is known as your knee voltage. Okay, so ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं, सबका डेफिनेशंस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई कैसे ये आ रहा है, किसको नी वोल्टेज बोलते हैं, किसको फॉरवर्ड रीजन बोलते हैं, किसको रिवर्स रीजन बोलते हैं, व्हाट इज द रिवर्स करंट एंड व्हाट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन। ओके, और व्हाट इज द ब्रेकडाउन और ओके। सो नाउ analysis of diode circuit usually comes down to determining whether the diode voltage is more or less than the new voltage. If it's more, the diode conducts easily, and if it is less, the diode conducts poorly. So it is but obvious that is, अगर if आपका जो वोल्टेज है वो न्यू वोल्टेज से कम होगा तो वो करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो इजीली करंट फ्लो हो सकेगा। ओके, नाउ वी डिफाइन the knee voltage of a silicon diode as a VK, that is 0.7 volt. सिलिकॉन के लिए हमने देखा है कि जो नी वोल्टेज है VK, that is K stands for knee and V stands for voltage, so VK that is 0.7 volt, और similarly for germanium this VK that is 0.3 volt. so basically यहाँ पे जर्मेनियम क्यों नहीं कंसिडर करें कि ज़्यादातर हम एज अ डायोड सिलिकॉन मटेरियल ही यूज करते हैं। ओके, सिलिकॉन डायोड आर यूज्ड एज अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, now even though germanium diodes are rarely used in new designs, you may still encounter germanium diodes in special circuit or in older equipment, वो older equipment में use होते थे। okay, now for this reason remember the knee voltage of the germanium diode is approximately 0.3 volt, and this lower knee voltage is an advantage and accounts for the use of germanium diode in certain applications। ये कम है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जिसमें ये अभी भी होता है, जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें कम चाहिए। ओके, नाउ वी विल से व्हाट इज द बल्क रेजिस्टेंस। दिस इज अनदर टर्म रिलेटेड to the characteristic, that is the bulk resistance. Okay, now above the knee voltage the diode current increases rapidly. Now this means that small increase in the diode voltage cause large increase in diode current. After the barrier potential is overcome, all that implies the current is the ohmic resistance of the p and n regions. In other words, if the p and n regions were two separate pieces of semiconductor, each would have a resistance that you could measure with an ohm meter, the same as an ordinary resistor, and the sum of the ohmic resistance is called the bulk resistance of the diode. So it is defined as the bulk resistance is equal to Rp plus Rn, मतलब कि जो आपका P साइड का रेजिस्टेंस है प्लस जो आपका N साइड का रेजिस्टेंस है उसे इक्वल टू द bulk resistance, and the bulk resistance depend on the size of the p and n regions and how heavily doped they are. Often the bulk resistance is less than 1 ohm, तो जो bulk resistance है उससे हम less than 1 ohm consider करेंगे। okay, now what is the maximum DC forward current? okay, so now what is maximum DC forward current? That is, if the current in a diode is too large, द एक्सेसिव हीट कैन डिस्ट्रॉय द डायोड। अगर डायोड में करंट काफ़ी ज़्यादा है तो हीट की वजह से वो डायोड को डिस्ट्रॉय कर सकता है या खराब कर सकता है। ओके, सो फॉर दिस रीजन अ मैन्युफैक्चरर्स डेटा सेट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम करंट अ डायोड कैन सेफली हैंडल विदाउट शॉर्टनिंग इट्स लाइफ और डिग्रेडिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके लिए भाई कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज और कितने करंट पे यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज या करंट हैंडल कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर को हमें बताना पड़ता है, तभी हम जान सकेंगे कि भाई हम इस पे कितने करंट और कितना वोल्टेज अप्लाई कर सके। सो इन केस ऑफ डायोड व्हाट दे आर कंसिडरिंग, दे आर गिवन एज अ आई मैक्स, आई एफ मैक्स, आई जीरो एक्सेट्रा। सो इस तरह से कुछ सिंबलाइज करके जो भी हमें दिया जाता है दैट इज द मैक्सिमम डीसी फॉरवर्ड करंट, के इतना मैक्सिमम हम फॉरवर्ड करंट ये डायोड हैंडल कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल IN456, that is the code of that particular diode. So IN456 has a maximum forward current rating of 135 milliampere. This means that it can safely handle a continuous forward current of 110
35 milliampere. So okay, so students, so this is the maximum DC forward current you can consider. Okay, and then now next, this is the power dissipation. What is power dissipation in diode? So you can calculate the power dissipation of a diode the same way as you do for a resistor. It equals the product of diode voltage and current. जो हम रजिस्टर में यूज करते हैं कि भाई उसका पावर डिसिपेशन हम रजिस्टर का कैसे गिनते थे, तो P इज इक्वल टू वी आई, जितना जो भी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट मिलता है वो हमें उतना पावर रजिस्टर में डिसिपेट होता है. सिमिलरली ओवर हियर टू पावर डिसिपेशन इन डायोड, there is a formula is given. There is the diode power dp is equal to diode voltage into diode current. Okay, and the power rating is the maximum power the diode can safely dissipate without shortening its life or degrading its properties. In symbols the definition is p max is equal to v max into I max. ओके, ये भी एक रेटिंग में आपको दिया हुआ होगा कि भाई पावर डिसिपेशन इसका क्या है, तो मैक्सिमम पावर उसका क्या है, that is the Vmax into Imax, that power it can be handled safely. Okay, where Vmax is the voltage corresponding to Imax. For resistance, if a diode has a maximum voltage and current of 1 volt and 2 ampere, its power rating is 2 watt. Okay, तो इस तरह से आप पावर डिसिपेशन को भी कंसिडर कर सकेंगे. Okay, so student, in today's lecture we will finish this session up to that. Okay, after that after this lecture we will see some of another terms related to the diode. Okay, so thank you for watching this. Okay, thank you very much. So students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.